तो मना किसने किया था? आपने किया था शादी करने से? Your Lordship, the fact was, I was not aware of the marriage of my देखिए another. मैडम, ये बात इसकी नहीं है, किसी लड़की की शादी है, किसी के साथ फिक्स हो गई, सेटल हो गया, सब कुछ होने के बाद माता पिता के ऊपर क्या बीतती है, लड़की के ऊपर क्या बीतती है, उसको तो मतलब आप यू कांट कंपनसेट इट। अगर चाहते, अगर आपको इम्प्लीकेट करना ही चाहते तो ये बोल सकते थे कि दहेज की मांग की है, जो भी की है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं शादी, जैसा भी है। तो किसकी अपील है? Your Lordship, हमारी अपील है, we are the appellant. अच्छा, किसकी अपील है? मीन्स इट इज अपील either filed by plaintiff or defendant। Defendant, Your Lordship. तो ऐसा बताइए ना, हमारी Lordship. अपील है तो हमको भी पता है कि आपकी Your अपील Lordship, apologies. डिफेंडेंट्स अपील। Your Lordship. सिविल सूट वाज डिक्रीड। Your Lordship. व्हाट वाज suit about? Your Lordship, herein the learned trial court, they have awarded the compensation towards damages sustained by the respondent plaintiff कितने on का है? on account of denial of marriage from being solemnized, being between appellant number 1 and daughter of respondent. And we were ordered to pay compensation to the tune of amount 1,01,284 rupees. एक्सपेंसेस। Expenses. तो मना किसने किया था? आपने किया था शादी करने से? Your Lordship, the fact was, I was not aware of the marriage of my son with some other person. And as soon as I got. उपाध्याय का नाम चलाइए। जी। ठीक है मैडम, दे दीजिए। काहे के लिए कर रहे हो? किसी को शादी करने के लिए आपने हाँ बोल के मना कर दिया होगा, ऐसे ही है। क्या लिखा है? वो तो Your Lordship, टीका फलदान सब हो गया, engagement ceremony हो के गया जो था। expenses, फिर उसके बाद साड़ी ब्लाउज वादी की ओर से खरीद कर उपलब्ध कराया गया, कपड़े किराया उनकी मांग पर 50,000 रुपए वादी द्वारा भुगतान किया गया। Your Lordship, my ground is that we have well communicated them as soon as I got the information. कार्ड छपवाए परिवार वालों, एक पक्षी आपने, एक 11/2/8 को आपने कैंसिल कर दिया। 11/2/2008 को मैरिज फिक्स की गई थी, बट बिफोर दैट वी हैव कम्युनिकेटेड एज सून एज आई गॉट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैरिज ऑफ माई सन विद सम अदर पर्सन, आई वेल कम्युनिकेटेड द रिस्पोंडेंट। ये तो ठीक बात है कि हो गया, चलिए जो भी हुआ हो, आपके बेटे की शादी हो गई या नहीं हुई, जैसा भी है, पर उन्होंने तो खर्च तो किया था और आपके एश्योरेंस पे किया था। योर लॉर्डशिप, ऑल्सो दैट उन्होंने ये डिनाई नहीं किया है कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उनके रिटर्न स्टेटमेंट में। तो फिर आपने फलदान क्यों किया, एंगेजमेंट क्यों कराया? योर लॉर्डशिप, जैसे आई वाज नॉट नोइंग माई सेल्फ व्हेन माय सन कम्युनिकेटेड टू मी। ठीक बात है, आपको तो पता करके करना चाहिए, उनका खर्च हुआ कि नहीं हुआ। ऑल्सो योर लॉर्डशिप, माय देखिए मैडम, ये बात इसकी नहीं है, किसी लड़की की शादी है, किसी के साथ फिक्स हो गई, सेटल हो गया, सब कुछ होने के बाद कार्ड छप गए, सब कुछ हो गया, एंगेजमेंट हो गया, उसके बाद कैंसिल कर दिए, रीजन जो भी हो, पर माता पिता के ऊपर क्या बीतती है, लड़की के ऊपर क्या बीतती है, उसको तो मतलब आप यू कांट कंपनसेट इट। आपने 1 लाख 1.5 लाख रुपए में आप कंपनसेट नहीं कर सकते। ये तो उन्होंने कब मांगा, बिल्कुल रिजनेबल मांगा है और कोर्ट ने दिया भी है। अदरवाइज we have paid the 50%. अगर चाहते, अगर आपको इम्प्लीकेट करना ही चाहते तो ये बोल सकते थे कि दहेज की मांग की है, जो भी की है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं शादी, जैसा भी है। तो वो अलग लग जाता, डाउरी प्रोविजन एक्ट सेक्शन 3(4). उनका ऐसा इंटेंशन नहीं था, जो उन्होंने खर्च किया है वो बताया, ठीक है, कुछ है नहीं गुंजाइश, लिखिए। योर लॉर्डशिप, इफ आई मे बी परमिटेड टू, उन्होंने जो नीचे जो टेंट लगाया है, दैट वाज अंडर सेक्शन 72 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। योर लॉर्डशिप, ये क्या हो गया? तो आई एम वन ऑफ माय ग्राउंड्स इज दैट it was not maintainable under contract act. Indian marriage act is not it is not a contract. Further we have फर्क क्या पड़ता है उससे? अगर मान लीजिए उन्होंने गलत सेक्शन लिख भी दिया, व्हाट वाज द रिलीफ sought by them? relief was to pay so and so amount. बस हो गया, सीधी सी बात है।
सेक्शन Because- अगर गलत कर भी दिया, उन्होंने कोट कर भी दिया है, तो इट डजंट अफेक्ट, उससे क्या फर्क पड़ेगा अगर उन्होंने सेक्शन का, उनका तो ये था, द प्लेंटिफ वाज क्लेमिंग डैमेजेस, ऊपर डॉक्यूमेंट्स को जो भी है प्लेंट है, you have to read it thoroughly, and thereafter you have to go through the relief sought by the plaintiff, and thereafter you can come to a conclusion that is it filed under any provision, specific provision, or it is a simplicitous suit claiming therein damages, compensation, or declaration, or injunction whatsoever. Yes, sir. He has also admitted that wedding cards were got printed. He stated that his son Surendra performed court marriage with one Ranjana on 1/12/2007. Yes, Mr. Sinha. Apart from that, my lords, with due respect, what we were taught during the law, unlike Mohammedan law, It is not an contract, not a contract. not a contract. Marriage is not a contract as per the Hindu mythology. ये है कि the suit was filed under section 73, but relief was sought for payment of compensation damages which was incurred during engagement ceremony, in purchase of clothes, etc. Says, my lord, when a contract has been broken, the party who suffers from breach is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation for the loss or damage caused to him thereby, comma, which naturally arose in the usual course of things from such breach, comma, or which the party knew, comma, when they made the contract to be likely to be result from the breach of it. Such compensation is not to be given for any remote or indirect loss or damage sustained by reasons of breach. There should be a contract between the parties, first requirement. First requirement. What, If- for if- that, we'll have to fall back, Malad, to the initial sections that there was a representation, Acceptance, etc. acceptance wala. And then the terms of the contract have to be Yes, yes. defined. Then only the finding of breach can be recorded. Which term was violated? So, prima facie, ये Malad, तो one part हो गया. ये breach of contract, it is not a matter of breach of contract. But civil suit was filed under section 73. Relief was sought by the plaintiff for payment of compensation damages. So, So- mentioning section 73 would be fatal for plaintiff. because if he is seeking Damages. under section 73, then the prerequisites have to be fulfilled by him. ये Secondly, for such compensation, it is relevant होगा section 73 mention करना only. assuming for a moment, मान लेते हैं अगर section 73 mention नहीं करते हैं, तो किस provision में वो compensation चाह रहे हैं? It's simply damages. Simply damages मतलब for a contract नहीं, damages under what provision of law? Under torts, under fatal Torts accident, में तो आ ही जाएगा, क्यों नहीं आएगा torts में? negligent act, torts में tortious liability के लिए negligent act चाहिए. Fatal accident act जो आया बाद में, that is based on law on torts. So what was the negligent act on the part of the other party? ट्रायल कोर्ट ने क्या लिखा है मैडम? Lordship, ट्रायल कोर्ट ने 73 के लिए कोई भी इश्यूज फ्रेम नहीं किए. अच्छा, आपने कहाँ पे लिखा है? आपने WS में? यस लॉर्डशिप, हमारा विशेष कथन में लिखा हुआ है एट पेज नंबर 30. It would have been a different thing had they said कि at the time of engagement ये चीजें दी गई थी, रिकवरी सूट के तौर पे होता वो. लॉर्डशिप, रेलिवेंट पेज इज पेज नंबर 32. विशेष कथन.
कोई जजमेंट लाए मैडम आप? Your Lordship, इसके नीचे सेक्शन 73 के नीचे कंपनसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशंस रिजेंबलिंग दोज created by contract, not a तो specific. कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। When an obligation resembling those created by contract has been incurred and has not been discharged, any person injured by failure to discharge it is entitled to receive the same compensation from the party in default as if such person has contracted to discharge it and has broken his contract. नहीं तो उसमें नहीं, 73 में तो नहीं आएगा। दावा वास्ते प्रतिकर राशि क्षतिपूर्ति हेतु अंतर्गत धारा 73, तो मेरा मेंशन ऑफ इनकरेक्ट और रॉन्ग सेक्शन Is would not be fatal, madam. would not be fatal for the plaintiff. But having said so, then under what provision of law the damage and दावा वास्ते प्रतिकर क्षतिपूर्ति, सिंपल डैमेजेस तो क्लेम कर ही सकता है किसी भी अगर नहीं भी होता 73 नहीं भी लिखते तो भी कर सकते हैं। नो वो तो डिक्री हो गया इनके अगेंस्ट में। decree हो? Your Lordship, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद उन्होंने इशू फ्रेम नहीं किया, उस ट्रायल कोर्ट ने फ्रेम ही नहीं किया। एप्लीकेशन आपने मूव किया था, आपने एप्लीकेशन Lordship, रिटर्न स्टेटमेंट में हमने विशेष कथन, नहीं ठीक है, आपने लिख दिया। विशेष कथन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि धारा 73 के अंदर अंतर्गत या संविदा के लिए लिखा है। Your Lordship, पढ़ लीजिए, हमने पढ़ लिया। ठीक है मिस्टर सिंह, थैंक यू। Thus, it was a suit claiming therein damages / compensation. Though the plaintiff, due to mistake or wrong advice, mentioned section 73 of Indian Contract Act, but it would not be fatal, as in relief clause, the plaintiff has sought compensation / damages incurred in engagement ceremony, printing of cards, purchase of gifts, booking of marriage hall, etc. And the contention raised in this regard by Ms. Rai cannot be accepted. Next. The plaintiff has categorically deposed that stated in on affidavit that the marriage was that wedding of plaintiff, daughter of plaintiff and the defendant number 1 was fixed and engagement ceremony was performed on 29/10/2007. The defendant DW1 has not denied these facts. Though he has disputed the amount spent by the plaintiff in those ceremonies, but the factum of engagement ceremony was accepted. The defendant number 1 has DW1 in his evidence has stated that after engagement ceremony which was performed on 29/10/2007, the defendant number 1 in clandestine manner performed marriage with one Ranjana on कितने तारीख का शादी? 12वें महीने में है कुछ, 11th month में। 12वें महीने, so and so with one Ranjana, and when he was narrated about this fact, he informed the plaintiff immediately. 23/11/2007, 30/11 है ना, देखिए 23/11/2007, ऊपर में करेक्शन कर लेंगे, 23/11/2007 डेट ऑफ मैरिज। नेक्स्ट, the evidence of the plaintiff PW1 and DW1 would make it clear that there was
engagement ceremony, comma, gifts were presented to the family members of the defendant, comma, marriage hall was booked as marriage was scheduled on 11/2/2008, 11/2/2008. comma, wedding cards were printed, and all these above stated acts, the plaintiff had spent sufficient amount, and he has placed bills in this regard. Next, the learner trial court, after taking into consideration the oral as well as documentary evidence, passed the judgment and ordered the defendants to make payment of rupees so and so with interest at the rate of so and so. Take into consideration the evidence, oral and documentary, in opinion of this court, no case is made out for interference with the judgment and decree passed by the learned trial court. This appeal fails, hereby dismissed.